nature. Okay, just like simple example मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. उस दिन की तरह I'm not going to provide so many examples and I'm not going to explain how to balance a reaction. Let's go for the second part. Okay, so first is reaction with oxygen. Is it clear to anyone? Is anybody having any doubt with this point? Anyone having any doubt over here? You may raise your hand, otherwise I am starting with the next one. Alright, nobody is having? Still the students are entering. Okay, now the non-metals react with oxygen that we are going to discuss. This was reaction with oxygen. It was for metals. Okay, now reaction with oxygen. This is for non-metals. As metals and non-metals, we are discussing together only. Okay, so most of the non-metals react with oxygen to form acidic oxide and some other form neutral oxides also. Okay, so what I can say, non-metals react with oxygen, and what they will form? They will form acidic oxides. Okay, they may be acidic, they may be neutral oxides. All right. Now, if I want to give a reaction for this, then I can give the example of sulfur. Sulfur is a non-metal. Okay. Oxygen, I have told you, oxygen cannot exist in the atomic form. It always exists in molecular form, that is O2. So when sulfur reacts with oxygen, it will form sulfur dioxide, that is SO2. Is this reaction balanced? Yes, it is. As I'm having one atom of sulfur over here, same here, 2 of oxygen, 2 of oxygen. So no need to balance this equation, which is already balanced. So sulfur dioxide is not basic in nature, it is acidic in nature. Okay, this is sulfur. When it reacts with oxygen, it will provide you sulfur dioxide. Dioxide means 2 atoms of oxygen are there. Okay. Can I rub the upper part? As I hope you guys must have done, right? I'm again telling you, I'm not going to provide any notes to you guys. You just have to write along with me. Are you guys writing? Okay. अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, हमने वहां पर क्या बोला था कि जब हम सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अगेन बेसिक इन नेचर. यहाँ पर जब मैं इस सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगी तो ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस एसिड. ओके, when this sulfur dioxide will react with water, it will form sulfuric acid. मैंने क्या बता रखा है आपको? H2SO4, that is sulfuric acid. Here I am talking about sulfurous acid, that is H2SO3. This is sulfurous, and अगर आप sulfuric acid, if you remember, H2SO4,
It is sulfuric acid. क्या चेंज है? एक एटम ऑक्सीजन का चेंज है यहाँ पर, ठीक है? This is sulfurous acid. Now, is this equation balanced? Just check it once. 2 of hydrogen, 2 of hydrogen, 1 of sulfur, 1 of sulfur. Oxygen 2 plus 1, 3, O3. So this is balanced. No need to balance this equation, right? So sulfur dioxide, when react with water, it will give us sulfurous acid, okay, which is acidic in nature. Okay, this is acid, so it will be acidic in nature. It will be having pH more than 7 or less than 7. क्या होता है acids का? Yes, Bhavanshi, you are raising your hand. Yes, Bhavanshi, please unmute yourself. Yes, ma'am. मैम ये जो आपने नीचे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है ना, इसके नीचे क्या है? अच्छा, कुछ नहीं लिखा क्या? मुझे लगा आपने कुछ लिख रखा। Sulfuric acid. What I have written. Okay. Okay, ma'am. दोपहर बाद जाएगी सही से लगे आएगा में कैसा है क्लास चलेगी कि हां 1 बजे तक भेज देगी 1 बजे तक भेज देगी क्या Happen? Why Bhavanshi is not getting muted? Okay, fine. So, is this clear to everyone how the metals and non-metals react with oxygen? Okay. Now, the next we are going to talk about. Okay. ये reactions आपकी आती हैं, कैसे वो react करते हैं, ठीक है? Reaction with water we are talking about. Is there any need to give more example for this? I don't think so. Okay. चलिए एक और दे देते हैं. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है. It also remains in the molecular form, that is N2. So some of the non-metals react with oxygen to form neutral oxide. Okay. So acidic oxide, we have provided you the example. Okay. Now I'm going to provide you example for neutral. As I told you, they give neutral oxides also. Okay, so nitrogen will provide the neutral oxide. Example number B I am providing for the non-metals. Okay, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन भी कभी N के फॉर्म में नहीं करता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द N2 फॉर्म. ओके, सो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, देन दे फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O. Okay. Now, is this equation balanced? 2 of nitrogen? Yes. 2 of nitrogen, 2 of oxygen. So here we are having only 1 atom of oxygen. So I have to put 2 over here. But if I have put it 2, nitrogen के तो 2 into 2 4 हो गए, और 2 oxygen के हो गए. So oxygen is okay, but nitrogen के 4 होने चाहिए. So I am putting 2 over here. So 2N2 plus O2 gives us 2N2O, that is nitrous oxide, which is neutral in nature, not acidic. So metals, when react with oxygen, they will form basic oxides, and when non-metals react with oxygen, they will form acidic or neutral oxides. Okay. Now, can I wrap this part? So we can discuss. But no. जितना मैं कर पा रही हूँ, आप उतना भी reactions learn कर लें. Then to it is okay. No need to getting confused. Okay.
Two activities are there that we will discuss later on. All right. So, is it clear with everyone? Now, second one, reaction with water. Okay, for metals and non-metals, both we are going to discuss. देखो metals जब react करते हैं water के साथ, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर से और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं. ओके, या फिर मेटल ऑक्साइड बना देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ऑलराइट, अब इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी प्रोवाइडेड है आपकी बुक के अंदर कि मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. इसके लिए व्हाट वी हैव डन फॉर दिस, we have cutted a small piece of sodium with the help of knife. As I have already told you in the physical properties of metal that sodium and potassium are metal, but they are exception. They are not hard, they are not having high densities. They could be cut with the knife. ओके, सोडियम मेटल को हमने नाइफ से कट किया एंड हमने रिमूव किया कैरोसिन बाय प्रेसिंग द पीस बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर. राइट, जो भी कैरोसिन था उसके अंदर उसको हमने फिल्टर पेपर के अंदर उसको दबा करके और पूरा निकाल दिया. अब हमने क्या किया, कैरोसिन क्यों, बिकॉज इट मे रिएक्ट, right, may react in on the room temperature also with oxygen etc, oxygen water etc. That's why water vapor के साथ react कर सकता है, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है. Okay, sodium potassium are being put into kerosene. Okay, इनको केरोसिन में रखा जाता है. अब जब आपने सोडियम का पीस कट करके निकाला, so you have to remove that kerosene. So how you will do that? You do that by pressing it into the filter paper. Okay. Now I have taken a 250 ml beaker जिसको मैंने 3/4 पानी से फिल कर दिया है. Okay, अब मैंने सोडियम के पीस को वाटर के बीकर के अंदर डाल दिया. Okay, what happened? Obviously क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो सोडियम क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा. It will start floating on the surface of water. Okay, और उसी टाइम पर ये मेल्ट भी होगा, एक सिल्वरी व्हाइट बॉल बनती जाएगी जैसे जैसे कि मेल्ट होता जाएगा. ठीक है, अब ये जो सिल्वरी व्हाइट बॉल है सोडियम की, सोडियम डट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद द हिजिंग साउंड. अब ये सोडियम की सरफेस जो है वाटर की सरफेस को कवर कर जाएगी और एक छोटा सा हिजिंग साउंड आएगा, है ना, छोटी छोटी सी बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे. व्हाट आर बबल्स? दीस बबल्स आर फॉर द हाइड्रोजन गैस व्हिच इज इवॉल्विंग आउट. ओके, ये जो सिल्वर बॉल बन रही थी सोडियम से, धीरे धीरे बॉल तो get reduce in size and it will start catching fire. It burns with a golden yellow flame, right? Yellow flame के साथ. Are you able to see in the picture on page number 62 in your book? Open up your books if you are having in front of you. Page number 62, activity number 5. Okay, don't worry, I'll show you a video also to explain it more. Okay, so now what will happen? It will start burning a yellow flame. You will be able to see. अब ऐसा क्यों हुआ? ये सोल्यूशन गर्म क्यों हो गया? क्योंकि इसमें फ्लेम जल रहा है. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसमें फ्लेम स्टार्ट हो गया? क्योंकि जो हीट इवॉल्व थी रिएक्शन के अंदर, उसने पहले तो सोडियम मेटल को गर्म किया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई रिएक्शन में जिसने की आग पकड़ ली. हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर. ओके, दैट्स व्हाई जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसने आग पकड़ ली. इस रिएक्शन के बाद अगर मैं इस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करूं whether it is acidic or basic in nature, then red litmus turns blue. What I mean by this, if I am saying red turns into blue and blue turns into red, क्या मतलब होता है turns into blue का? Whether it is acidic or basic. Ishant is saying it is base. Anyone else? You may give your answer in the chat box, Muskan.
मैंने आपको बताया था R2B और B2R बताया था ना, and I have showed you the activity of litmus papers also in 7th class, right? Yes, Muskan, you want to ask something? Yes, Muskan, you may unmute yourself. Now at some places your marker is so light. Marker is so light. Let me try if I can put more ink in this. Okay, I'll put a little bit ink in it. Till then, keep on writing this and just think about it. I have told you earlier. I hope it didn't get this. I hope it will work better. Yes. So, what is the chemical reaction for this? Let me discuss that. Can I wrap this part? Sorry. Okay. So, what I have told you, हमने किसकी एक्टिविटी पढ़ी? सोडियम. हमने क्या बताया? सोडियम जब हम वाटर के अंदर इसको कट करके वाटर के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, राइट? और उसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट इज NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और हीट भी इवॉल्व होती है. दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप नाउ. अब जो वाटर का ग्लास है दैट विल गेट हीटेड अप. इज दिस रिएक्शन बैलेंस नाउ? Let's check it out. Sodium 1, okay, sodium 1, oxygen 1, oxygen 1, we are having hydrogen 2, but here we are having 3 hydrogen, 1 plus 2. So we have to balance this equation. अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, now I am having 2 plus 2, 4 of hydrogen, right? यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया, बट इससे ऑक्सीजन मेरे पास 2 हो गया. ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, बट सोडियम भी मेरे पास 2 हो गया. 2 of sodium, 2 of sodium, 4 of hydrogen, 2 here, 2 here, 4 of hydrogen, 2 of oxygen, 2 oxygen, right? हो गया. Now this equation is balanced. Okay, so when a metal reacts with water, hydrogen gas is evolved. Okay. This arrow shows the gas is evolving out. Okay. इसी तरीके से आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो. आप मैग्नीशियम का जो हमने वहां एग्जाम्पल किया था वो भी दे सकते हो. फाइन. आप पोटेशियम का भी एग्जाम्पल दे सकते हो. जिंक का एग्जाम्पल भी हमने दिया था वाटर के साथ, राइट?
give example for zinc. Zinc can react with water. क्या बनाएगा? Zinc hydroxide बनाएगा, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो. Sorry, zinc oxide बनाएगा. ठीक है. Metals, magnesium react करता है hot boiling water के अंदर और magnesium oxide बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. Zinc जब react करता है water के साथ, then zinc oxide बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. Okay? Zn, Zl. Zinc 1O, 1O. 2 of hydrogen, 2 of hydrogen. Reaction balance है. आप मैग्नीशियम की ले लीजिए. मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है बबल्स के फॉर्म. ठीक है. which may get है Mg, one atom of Mg over here, one over here. These are the reactants and these are the products. So number of reactants should be equal to number of products. Then only the reaction will be balanced. Okay, एक Mg, एक Mg. Single O, single O. 2 of hydrogen, 2 of hydrogen. Reaction balance. ठीक है. एक कॉपर मेटल एक्सेप्शन है जो कि रिएक्ट नहीं करता है स्टीम के साथ. ठीक है. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब अनरिएक्टिव है. ओके. एंड रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे बॉटम में रहते हैं. आर यू एबल टू सी द रिएक्टिविटी सीरीज गिवन इन योर बुक? It's given on page number 63. Just check in your book. Potassium is there on the top. After that, sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium. Like this, इनकी reactivity कम होती जा रही है. And gold, platinum, silver, they are at the bottom. That means they are least reactive metals. Okay. You should know about the most reactive metal and the least reactive metals. Right. Most reactive metal is the potassium. And least reactive metal is the platinum. Okay, is it clear? किसी भी रिएक्शन में मेटल रिप्लेस कर सकता है दूसरे मेटल को if it is placed above the other metal in the reactivity series. अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर एक रिएक्शन के अंदर मेरे पास पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है, because potassium is more reactive than magnesium, then it can replace magnesium. Okay. Now let's talk about reaction with acids. Okay. Yes, Vavanshi, what doubt you are having? You are raising your hands, Vavanshi. Let me move to Khyati Mehra too. Yes, Khyati, please unmute yourself. एक्सक्यूज मी मैम. मैम ये चैप्टर 4 के आप एक बार लास्ट में नोट्स दिखा दोगे क्या? Oh, these are the notes only which I am providing you on board. ओके मैम. I have told you this thing earlier only. I am not going to provide any PDF of notes. Yes, Pavanshi, what's your doubt? Khyati, you may lower down your hand as your query is cleared. Yes, Pavanshi. मैम ये जो आपने Zn प्लस H2O और Mg प्लस H2O इनका जो फॉर्मूले के आगे इनका जो लिखा है ना, तो उसमें ऊपर एरो का ही का है. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है. ओके, दैट एरो इज शोइंग दैट तो गैस. मैम ये जो हीट लिखा है ये भी लिखना है क्या? Heat is evolving out along with that. Yes, it is also evolving out along. Okay. You may lower down, Manshi. All right. Let me discuss one more point of this.
From tomorrow, all of you will keep your videos on. Okay. At least till the attendance time. When I'll take the attendance, all the videos should be on. Alright. At least for 5 minutes, you guys can on your video. Show me your face. Okay. Now, is it clear the reactivity series? Now reaction with acids. How they react with metals and non-metals react with acids. Acids क्या होते हैं जो H plus ion देते हैं. When we dissolve them in water, they will give H plus ion. Examples क्या हैं acid के? You may say hydrochloric acid. You may say sulfuric acid. You may say nitric acid. कोई भी example ले लीजिए. ठीक है? Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. That is acid. Any example you guys may take. Okay? For the acids. Now, how the metals react with acid? When they will react with acid, they will form salt and hydrogen gas will be evolved over there. Okay. Metals, when react with acids, they will form salts plus hydrogen gas evolves out. Okay. All right. So any I can take say वापस मैं जिंक मैग्नीशियम कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ जैसा कि मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया मैग्नीशियम की मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा ठीक है व्हाट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और वहां पर मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3 ओके सो this is sulfuric acid this is magnesium आप Mg नहीं बोलोगे आप मैग्नीशियम बोलोगे मैग्नीशियम will react with sulfuric acid what it will provide you क्या बताया मैंने salt बनाएगा ठीक है MgSO4 और क्या निकलेगा ये इसके साथ अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा Is this equation balanced? Just check it once. Is this balanced? 1 of magnesium? Yes, 1 of magnesium. 1 of sulfur? 1 of sulfur. 4 of oxygen? 4 of oxygen. 2 of hydrogen? 2 of hydrogen. So the equation is balanced. So it will form magnesium sulfate plus hydrogen gases evolved. What is this? This is magnesium sulfate. ओके सॉल्ट अब देखो सॉल्ट जो होते हैं एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बनते हैं ठीक है अब ये सॉल्ट बन गया है मैग्नीशियम सल्फेट का ओके डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं हाउ दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर दिस one activity is being provided in your book I'll show you a video for this activity okay in my next class I'm going to end my class over here. We'll meet in the next class. If anyone is having any doubt, they may ask to me. Any doubt to anyone? All right. Thank you so much for today's class. Have a nice day to everyone.